गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग एंड हम तैयार हो चुके हैं. वी आर नाउ हेडिंग इनटू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉर द सफारी. इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को चितवन की तरह इस बार डिसअपॉइंट नहीं होना है. कोई साइटिंग हुई अच्छी तो अच्छी बात है, नहीं तो इट विल बी अ गुड जंगल एक्सपीरियंस. एंड हमें बोला गया था कि सुबह जंगल में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो जितने कपड़े पहन सकते हो पहले ना. आई एम लिटरली वेयरिंग एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम कैरिंग, राइट. एनीवेज देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये. आई एम श्योर दिस विल बी एंजॉयबल. Fingers crossed for the Royal Bengal tiger. Hey everyone, my name is Antrik. I'm a 28-year-old Indian backpacking around the world, making friends and creating memories. 3 years and 7 countries later, अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है. Located in Uttarakhand, Corbett Tiger Reserve is India's oldest national park, established in 1936. The park has several zones which one can choose for visiting on a day safari. Safaris and entry permits for Corbett need to be booked online, well in advance because they are usually very high on demand. We were staying at Aahana, the Corbett Wilderness, about 8 kilometers from Ramnagar town. And this morning we are heading for the safari in the Jhirna zone of the park. तो हम आ चुके हैं कॉर्बेट के अंदर इन झिरना रीजन एंड इंतज़ार हो रहा है कब कहाँ कौन सा जानवर नज़र आएगा. तो हम झिरना एरिया में गए थे और वहाँ पे हमें टाइगर तो नहीं दिखा, but we did manage to see a lot of other animals. एक जगह तो एक elephant like it came right on the street in front of us and we were able to spot it very clearly. वो काफ़ी टाइम तक वहीं पे इधर उधर होता रहा. ये हाथी निकल रहा है और उसके पीछे डियर है. I think this was the first time ever that I saw a wild elephant in the wild. पहले मैंने zoo में ही देखा है. And उसके बाद हमें बंदर काफ़ी सारे दिखे, डियर्स बहुत सारे दिखे. What's up bro? मंकी भी बैठा है. और ये पंचायत शुरू हो चुकी है. सरपंच जी बैठे हैं इधर. ये एक बंदर निकल रहा है चुपचाप, बोर हो गया है. एक जगह तो वी सॉ दिस बिग ग्रुप ऑफ डियर्स लाइन में चल रहे हैं और वो आगे जाके पानी पी रहे हैं. दैट लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग. चल एंड फिर अ लॉट ऑफ पीकॉक्स, अ लॉट ऑफ वाइल्ड बोर्स. एक ही तो दिख रहा है. 2 और आगे. सबसे बड़ा होता है ना. क्या नाम है इसका? हिमालयन ग्रिफन. हिमालयन ग्रिफन वल्चर. एट वन पॉइंट आई थिंक वी डिड कम नियर अ टाइगर एंड टाइगर ने हमें देख लिया होगा. हम उसे नहीं देख पाए, वो छुप के बैठा था. हम एक जगह पहुंचे एंड वी वर जस्ट वेटिंग शांत कि शायद टाइगर निकले यहाँ पे, क्योंकि तभी किसी ने देखा था वहाँ. बट वहाँ पे हमने देखा कि डियर्स अचानक भागने लग गए, मतलब कि देयर वाज अ टाइगर समवेयर अराउंड. बट उसी टाइम पे 4-5 जीप और आके पहुँच गए और इतने शोर में शायद टाइगर बाहर आया ही नहीं. मम्मी पापा शुरू हो गए अब. उन्होंने सोचा अब इंटरवीन करना पड़ेगा. बचपन में जैसे बोलता था. तो ये है एंट्री गेट जहाँ से हम सुबह अंदर घुसे थे, लेकिन सुबह पूरे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था.
But anyways, it was a superb experience. हम around 10 साढ़े 10 बजे तक वापस होटल आके पहुंचे and we just had our breakfast. I think we'll just rest a bit now and फिर शाम का थोड़ा बहुत plan है कुछ मैं बताता हूँ. ये रोहनी का पेड़ and this is like the main source of सिंदूर. इसको क्रश करने से निकलेगा? अच्छा ये तो ऐसे ही लग रहा है हाथ में. एक चुटकी सिंदूर ऐसा होता है. So now we have come to ढीला village. Basically ढीला नदी है which is a monsoon river. अभी तो पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ. And we're just going to walk around probably on the river bed. And ऐसे ही थोड़ा explore करेंगे, birds वगैरह देखेंगे. We have just been told कि अगर कोई predator आता है usually it's the last man in the group which is attacked first. जैसे भूतों वाले फिल्मों में होता है ना, पीछे से एक एक करके गायब होते जाते हैं. और मैं अभी लास्ट वॉक कर रहा हूँ. What is it? मतलब यहीं आसपास. हाँ, ये फ्रेश मतलब सवेरे का है. we are on the river bed right now. Sunset हो रहा है and this is the time when the animals come out. So अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं and we are hoping कि हमें कुछ जानवर दिख जाएं. We just spotted a few nilgais, a few sambars, some wild boars. दूर दूर में टाइगर दिखने से अच्छा है but I don't want tiger to be visible to us when we are on our foot. पेड़ पे बंदर चढ़ रहा है. अरे दो हैं, 3 4 काफी है वहाँ. हाँ बहुत हैं. सब धीरे धीरे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ रहना उनका डार्क में इज नॉट सेफ. टाइगर विल किल देम. तो दे मस्ट कम इन दी ओपन. तो ओपन में रात में भी दूर से टाइगर दिख जाएगा आ रहा है. Just look at the size of these leaves. मेरा हाथ इतना सा है in front of these. These are huge leaves. देखो, there's like 10 hands. ऐसा आप यहाँ जंगल में अपने आप तो आ नहीं सकते हो, खो जाओगे. हाँ. तो हम भी यहाँ पे आए हैं with Mr. Romesh. He is actually a very senior naturalist and he has immense knowledge about all the animals and all the trees, all the bird species that are found around here. Like he has worked in wildlife for what, 40, 45 years? 50 years. He's 70 years old. तो अभी हम इन्हीं के साथ आए हुए हैं यहाँ पे जंगल में. We have covered about 6 kilometers from our resort and this is a very nice place to walk about and see immense beauty of the jungle. Yeah. So it's actually an adventure to just walk around here. Yes, it is very adventurous to walk around and it gives you a great feeling when you walk in tiger infested jungle, you know. Yeah. It sort of there's adrenaline rushes in your body, you know. You feel damn good. Yeah. So have you luckily we have not seen any tiger on the way, but we have seen the signs of tiger, like pug marks and scratch marks on the ground, you know. That means tiger, if you don't see a tiger, but tiger makes his presence felt. Yeah. Always, you know, in the jungle. Okay. Have you ever like come very face to face with a tiger or something? Number of times while walking like in the any forest. Dangerous moment that you remember? No, not dangerous moment. The tiger, if I'm walking and suddenly he comes crosses the road, you know, where I'm walking, he invariably walks on the road, you know. He's very finicky about his paws. So when he comes in front of us, he stops and he looks at us. We also stop, and then for a moment, you know, it's something very great. I cannot describe through my words, you know, how we feel about that moment. Like, and were you never attacks. scared? Tiger is a gentleman, but number of times we were walking in the jungle, we have come across elephants, herd of elephant or a
single elephant, tusker elephant, you know, then we really are afraid in such situations, you know. We have to run for our lives, you know. I'm surprised that you have been Yes. scared for elephants and not for Elephant, tigers. Not for tiger, yes. Tiger is a gentleman. Tiger Yeah. never attacks without any reason, you know. If you provoke these animals, they will attack you. Otherwise, elephant can, he doesn't look for the reasons. He doesn't like you. Yeah. So he will definitely attack you. He sees you, he will chase you for some time. And Usually the perception is that elephants are very gentle. no, they are very aggressive, and especially when they have a huge herd and the small ones are there, the mothers are very aggressive. Yeah. They are very aggressive, so you have to be very careful while walking in the forest. And at times, you know, we have smelled elephant and we have come out of the forest immediately, you know. Okay. There is a very peculiar smell of an elephant. When we were walking in the bush, we smell the elephant. So because of that, we have to leave the place immediately. This tells me something. This morning, the elephant that we saw, that was more dangerous than spotting tigers. Spotting time. So thank you so much, sir. You're welcome, sir. It's been an absolutely lovely stay here at Aahana. And इतना amazing hospitality है यहाँ पे. The food is so good, so good. We have loved each and every meal that we have had here the last 3 days. And अब time हो चला है निकलने का. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed the safari and the jungle walk and all of it. Make sure you like it, leave a comment below with your thoughts and subscribe to the channel if you haven't yet. There's some more awesome content coming up in the next few days.